Media and acquisition of stereotypes. Before talking about the role of media in promoting various kinds of stereotypes, let's see what is stereotypes. Stereotypes are actually beliefs that hold that all members of a group share the same set of characteristics, attitude, and life conditions. हम जब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के मतलब कोई ओपिनियन बनाते हैं या किसी एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के मतलब या किसी एक पर्टिकुलर जो रेस के मतलब, तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि उसके तमाम जो ग्रुप मेंबर्स हैं उस एथनिसिटी के या उस रेस के या उस एक पर्टिकुलर ग्रुप के किसी एक माइनॉरिटी के, वो उनके तमाम के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड्स और लाइफ कंडीशन एक ही तरह की है, तो इट इज़ एक्चुअली वी आर डूइंग स्टीरियोटाइपिंग. Stereotypes deny any diversity among members of the same group. जैसे अभी हमने कहा है कि भी स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि वी व्यू ऑल द ग्रुप मेंबर्स इन अ सिमिलर मैनर. We are denying the diversity of the group members, so that we are rejecting that they can have different kind of life conditions or different kind of ideologies or different kind of worldview. And most of the time stereotypes are negative and limiting. जब भी stereotypes की बात होती है तो ये नेगेटिव इन नेचर होते हैं और लोगों की फ्रीडम को लिमिट करते हैं. ये लोगों के मतलब मनफी रुझानात यानी मुख्तलिफ ग्रोहों के मतलब समाजी ग्रोहों के मतलब मनफी रुझानात को बढ़ोतरी देते हैं और उनकी जो आज़ादी को जो है वो लिमिटाइज करते हैं. When we talk about TV and stereotypes, we come to know that TV programs rely on stereotypes. In most of the cases, television programs rely on stereotypes. Why? Because as a business, they need to attract a large audience. And to attract the large audience, they use stereotypes in their programs. And they present content that is easily understood by a wide range of people, young and old, educated and uneducated. Whenever we ask question about the production team of the media content, that why are you promoting certain kind of stereotypes in your media content, they tell us that we are making content which is understandable for everyone, for educated and for uneducated people as well, and that can be understood by the majority of the people. तो वो ये कहते हैं कि हम इसको इंटेंशनली नहीं करते, बल्कि हमने एक ऐसा कंटेंट बनाना है जिसको तमाम लोगों को वो आसानी से समझ आ जाए और वो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों के लिए हो. So, television is filled with stereotyped images of women, minorities, and elderly. Whenever we watch media content on the television, we see that there are lot of stereotyped images of women, minorities, and the elderly people. Stereotypical content of television has been remarkably stable over the past years. हमें ये अगर हम रिसर्च देखें, कंटेंट एनालिसिस जो स्टडीज़ पब्लिश हुई हुई हैं, अगर हम उनको स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि जब से टेलीविज़न आया है और आज तक जो है जो स्टीरियोटिपिकल कंटेंट है वो अभी तक स्टेबल है और अभी तक उसी तरह ही उसको जो है मेन कंटेंट का हिस्सा बनाया जाता है और वो ऑन एयर किया जाता है, उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है. तो इसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई, कुछ कमी ज़रूर आई है, मगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुआ स्टीरियोटिपिकल कंटेंट ओवर द ईयर्स.